Uh, Adding date checks to goods receipt. Goods receipt chapter चालू होता ना आपला, राईट? त्यातला शेवटचा लेसन आहे हा, ऍडिंग डेट चेक्स टू गुड्स रिसिप्ट्स. That is nothing but shelf life expiration date check. Okay. Shelf life expiration date check. In short, it is also called as SLED, shelf life expiration date. Now, there will be some materials for which shelf life will be applicable. Now, what is shelf life? Shelf life means after some time, those materials will get expired and you cannot use them. Mainly chemicals, they have a validity period. So after that validity, they cannot be used, they cannot be consumed. Okay. So the materials for which there is a shelf life, how we can check shelf life of those materials at the time of goods receipt or at the time of goods issues, that we are going to see. For example, टॅबलेट्स असतील किंवा काही असे आयटम्स जे आपण कन्झ्युम करतो, मिल्क असेल, बिस्किट्स असतील, जे काही पॅकेज्ड फूड असतं त्याला एक व्हॅलिडिटी पिरियड असतो. अँड आफ्टर दॅट व्हॅलिडिटी पिरियड यू कॅनॉट कन्झ्युम दॅट. आपण त्याला यूज नाही करू शकत. So while purchasing those items, we look at their shelf life expiration date. मेडिसिन्स असतील किंवा कुठलंही प्रोडक्ट ज्याला एक्सपायरी डेट आहे, ते परचेस करत असताना आपण त्याची एक्सपायरी डेट पाहत असतो. का पाहत असतो? बिकॉज इफ इट इज एक्सपायर्ड, we cannot use it. Okay. And how much time we are going to consume, ते प्रोडक्ट घेतल्यानंतर त्याला कंझ्युम करण्यासाठी आपल्याकडे किती टाइम आहे, ते पाहून आपण ते परचेस करत असतो. So that you have enough time to consume that material before it gets expired. Okay. So in companies also, when we purchase materials for which shelf life is applicable, at the time of goods receipt, we need to make sure that the material is having enough shelf life before we consume it. For example, XYZ मटेरियल है, XYZ मटेरियल है, उसका टोटल शेल्फ लाइफ 100 days है. 100 days is its total shelf life. So if it is manufactured today, what is the date today? 17th of July. 17th of August, 17th of September, 17th of October. 90 days हो गए plus 10. 27th of October. Roughly suppose 27th of October 2023 is its expiry date. It's manufactured today, 17th of July 2023, and its expiry date is 27th of October 2023. 100 days is its total
shelf life. So if you manufacture it today, it will get expired on 27th of October 2023. Now you place a PO for this XYZ material for suppose 500 quantities, and its delivery date is 15th of August 2023. Okay. Now the material is delivered on 15th of August and you want to do the goods receipt of this material on 15th of August, right? Now on 15th of August, when you do the goods receipt of this material, how much shelf life is remaining for this material? कितना shelf life इसका बाकी है? तो 17th of July to 15th of August, 31 days हो गए यहाँ तक. 31 days का लाइफ इसका खत्म हो चुका है. So how much is remaining? 100 minus 31, 69 days shelf life is remaining when you are trying to do the goods receipt on 15th of August. Got it? Clear? Now you receive the material if, let's understand it in another way. Now, so for this material XYZ, the time that I require to consume this material when I receive this material, इस मटेरियल को रिसीव करने के बाद मुझे इस मटेरियल को कंज्यूम करने में, यूज करने में मिनिमम 30 दिन लगते हैं. ठीक है. माय कंजम्पशन टाइम इज 30 days, मैक्सिमम 30 days सपोज. ठीक है. 30 दिन के अंदर मैं इसको कंज्यूम कर सकता हूं रिसीव करने के बाद. अगर मैं इसको 15th ऑफ अगस्त को रिसीव करता हूं तो उसमें 30 दिन अगर मैंने ऐड किए तो 16th ऑफ अगस्त तक मैं इसका कंजम्पशन कर सकता हूं. तो उसका जो शेल्फ लाइफ मेरे लिए रिक्वायर्ड है वो कितना है? मिनिमम 30 डेज, कम से कम 30 दिन होना चाहिए. अगर उसका शेल्फ लाइफ कम से कम 30 दिन है तो ही मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा. Otherwise I will not accept it. So here the shelf life remaining is 69 days. I can accept it. अगर इसका shelf life सिर्फ 15 दिन बचा होता तो I would not have accepted this material because 15 दिन का shortage है. Sorry. Clear? Understood? Yes. Let me repeat it again. कोई मटेरियल है जिसका शेल्फ लाइफ 100 दिन का है, उसको कंज्यूम करने में मुझे कम से कम 30 दिन लगता है. मैं उसको रिसीव करके मेरे वेयरहाउस में 30 दिन तक स्टोर करके रखना चाहिए उसको मुझे, बिकॉज आई रिक्वायर मिनिमम 30 डेज टू कंज्यूम इट. तो उसका जो शेल्फ लाइफ है 30 दिन से ज्यादा होना चाहिए. अगर 30 दिन से कम है 15 दिन तो हो सकता है कि मैं उसको कंज्यूम ना कर पाऊं और वो वेस्ट हो जाएगा. सो आई एम मेकिंग श्योर कि उसका मिनिमम रिमेनिंग शेल्फ लाइफ इज ग्रेटर देन 30 डेज, तो ही मैं उसका गुड्स रिसिप्ट करूंगा. अदरवाइज आई विल नॉट डू द गुड्स रिसिप्ट बिकॉज
वो मेरे कुछ काम आने वाला ही नहीं है, 30 दिन के अंदर मैं उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, तो उसका शेल्फ लाइफ 30 दिन से ज्यादा होना चाहिए. सो व्हेन आई एम डूइंग द गुड्स रिसिप्ट, आई एम चेकिंग व्हाट इज द मिनिमम रिमेनिंग शेल्फ लाइफ ऑफ दैट मटेरियल. उसका मिनिमम शेल्फ लाइफ कितना है वो मैं चेक करता हूँ. अगर वो मेरे कंजम्पशन टाइम से ज्यादा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, अगर कम है तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा. So when you do the goods receipt on 15th of August, system will calculate the remaining shelf life. कैसे calculate करेगा system remaining shelf life? We are doing the goods receipt on 15th of August, तो system के पास posting date है 15th of August. इसका manufacturing date और expiry date, वेंडर जो हमको इनवॉइस देता है उस पे ये दोनों चीजें होती. जो मटेरियल शेल्फ लाइफ है मैनेज्ड है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट वो इनवॉइस पे आता है. दैट यू नीड टू एंटर एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट. गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे हम उसको गुड्स रिसिप्ट में डालते हैं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है. तो यू हैव 3 डेट्स, दिस डेट एंड दिस डेट. तो सिस्टम इस डेट से इस डेट तक कितना टाइम बचा हुआ है वो कैलकुलेट करके हमको बता देगा कि कितना मिनिमम रिमेनिंग टाइम बाकी है, so that we can take a decision whether we can do the goods receipt or no. To activate the SLED, we need to do configuration setting. We need to activate it. Okay, at plant level and at movement type. ठीक है. Then in material master, plant storage location data. At storage location level, we can maintain SLED data. Maintain shelf life expiration date data. And when you do this, you can do the goods receipt. You can create the PO, do the goods receipt, and at the time of goods receipt, we can check how system will behave when we do the goods receipt. When the shelf life is greater than minimum remaining shelf life, and when the shelf life is less than minimum remaining shelf life. Now I am going into configuration IMG, where we will activate the SLED under materials management, inventory management and physical inventory. You can go to plant parameters. Here you go to plant and go to its details, and you can see here BBD/production date, and this checkbox is selected. So when we select this checkbox, we are making sure the shelf life expiration date check is activated at plant level. So BBD is best before date slash production date, means SLED, shelf life expiration date.
हॅलो, आवाज येतो का? हो सर. ओके, सॉरी, पावर चला गया तो डिस्कनेक्ट हो गया. IMG material management. Plant parameters, plant, and this checkbox needs to be selected best before date slash production date. Once you do this, then you need to go to the movement type and we need to select at which movement type we want to check the shelf life expiration date. For example, at the time of goods received, if I want to do check, if I want to check at the time of goods received, what is the remaining shelf life, then I need to activate that at movement type level. Here you can see check shelf life expiration date check. So this is movement type 101, and at movement type 101, check shelf life expiration date 1 is entered here. So there are four options. If you keep it blank, system will not check the shelf life expiration date. अगर ये blank है तो system shelf life को check नहीं करता है. 1, if you enter value 1 here, it means enter and check. So you can enter the shelf life data in the material master and goods receipt, and at the time of goods receipt, system will check what is the remaining shelf life available. If you select 2, you can only enter, system will not check what is the shelf life remaining. And third, no check at goods issue. अगर goods issue के time पे, for example, if you are issuing material from warehouse to production, and at that point of time you want to check what is the remaining shelf life, that also can be activated. But अगर goods receipt के time, goods issue के time पे अगर आपको check नहीं करना है, तो आप यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर सकते हो उस गुड्स इश्यू के मूवमेंट टाइप पे. ठीक है, 201 है, 261 है, जो भी गुड्स इश्यू का मूवमेंट टाइप है, वहां पे अगर हमको शेल्फ लाइफ चेक नहीं करना है तो वी कैन एंटर 3. अगर चेक करना है तो वी हैव टू एंटर 1. सो यहाँ पे मूवमेंट टाइप पे हमने 1 डाला हुआ है. सो दीज आर द टू कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स that we need to do to test or activate or to implement shelf life expiration date check. Now, once you do this config settings, you need to go to master data and maintain the master data. Now, let us go to material master, create a new material master, basic data, purchasing data, plant data, storage 1. This is the view where we can maintain the shelf life expiration data and accounting data. Click on continue. Valuation class, moving price. Now let me go back to plant data storage 1, and this is where you can see shelf life data. This is where we can enter the shelf life data. Now here you can see minimum remaining shelf life. So I'll enter here 30, and period indicator for shelf life is T.
डेज सॉरी। तो कितने दिन मिनिमम रिमेनिंग शेल्फ लाइफ है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो मिनिमम रिमेनिंग शेल्फ लाइफ आई हैव एंटर्ड 30। इसका मतलब है अगर उसका मिनिमम शेल्फ लाइफ 30 दिन से ज्यादा है तो ही मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अगर 30 दिन से कम है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यू कैन एंटर हियर टोटल शेल्फ लाइफ एज वेल। 100 दिन जैसे हमने कंसिडर किया था, किया तो भी चलेगा, एंटर किया तो भी चलेगा, नहीं एंटर किया तो भी चलेगा, बट मिनिमम रिमेनिंग शेल्फ लाइफ इज व्हाट वी नीड टू एंटर। अगर हम चाहते हैं कि जिसका शेल्फ लाइफ 30 दिन से कम है उसका गुड्स रिसिप्ट नहीं होना चाहिए, तो वी नीड टू मेंटेन इन मटेरियल मास्टर मिनिमम रिमेनिंग शेल्फ लाइफ 30 एंड पीरियड इंडिकेटर फॉर शेल्फ लाइफ एक्सपायरेशन डेट इज 30 डेज मिनिमम उसका शेल्फ लाइफ होना चाहिए। सेव इट, material is created, display the material, copy the material and now create a purchase order. I'll create a PO. Hundred quantities, 20 price, check it. In delivery tab, you can see minimum remaining shelf life 30 days is copied because we have maintained in material master record. So from material master, system copies this data into purchase order. Now check and save the purchase order. Copy the PO and go to goods receipt. Goods receipt, purchase order, enter. Now we have activated shelf life expiration date at movement type 101 and at plant AGP2, and we have maintained minimum remaining shelf life in the material master record. तो प्लांट वही है, मूवमेंट टाइप वही है एंड मटेरियल वो है जिसमें हमने शेल्फ लाइफ का डेटा ऐड किया हुआ है। तो अभी सिस्टम हमको इन तीन चीजों पे शेल्फ लाइफ को चेक करेगा। इफ आई ट्राई टू चेक इट, system will ask me to enter the storage location, enter the storage location. Now as soon as you check, enter the shelf life expiration date, because system को कैसे पता चला कि इसका shelf life चेक करना है? Based on three parameters: movement type 101, plant AGP2 and storage location SL01 में हमने shelf life का data maintain किया हुआ है। Now go to material tab and this is where you can see date of manufacture and shelf life expiration date slash BBD, best before date. This is nothing but expiration date and this is nothing but date of manufacture. So date of manufacture and date of expiration we need to enter here. ये supplier जो invoice देता है उस पे mentioned होता है। तो जो user goods receipt कर रहा है, he can enter the date of manufacture and he can enter the date of expiration. तो इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर सपोज आज 17th ऑफ जुलाई है एंड सपोज इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है 1st ऑफ जुलाई 2023। ठीक है, 1 जुलाई इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है इस मटेरियल का और एक्सपायरेशन डेट है सपोज 12th ऑफ अगस्त। ठीक है, 1 जुलाई को मैन्युफैक्चर हुआ है, 12 अगस्त को वो एक्सपायर होने वाला है। टोटल लाइफ कितना है इसका फिर? 1 महीना 12 दिन, 43 डेज इज इट्स टोटल लाइफ। ठीक है, हमने मटेरियल मास्टर में क्या मेंटेन किया हुआ है? मिनिमम उसका लाइफ 30 दिन रिमेनिंग होना चाहिए, 30 दिन तक मैं उसको स्टोर करके रख सकता हूँ। अभी मैं इसको चेक करूंगा
तो सिस्टम इज गिविंग मी अ एरर saying shortfall of 4 days against remaining shelf life in current item. 4 दिन का शॉर्टफॉल है because when we are doing the goods receipt, we are doing the goods receipt today. So from today, system will check till this date what is the remaining shelf life. तो इस डेट से इस डेट को अगर मैं माइनस करता हूं मुझे कितना टाइम आता है? तो 12 ऑफ अगस्त, तो अगस्त महीने के 8 दिन और 17 जुलाई इस महीने के कितने दिन हो गए? 31 जुलाई, राइट? 31 माइनस 17, 14 डेज ये हो गए, प्लस 12 डेज ये हो गए, 26 डेज हो गए। हमने 30 दिन मेंटेन किया हुआ है, तो 4 दिन का शॉर्टफॉल। अंडरस्टूड? क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अगर इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, 12 ऑफ अगस्त की जगह पे मैं अगर इसको 31 ऑफ अगस्त 2023 करता हूँ, मैं इसको चेक करता हूँ, तो it is okay, I can do the goods receipt because अभी इसका लाइफ कितना बाकी है? 31 ऑफ अगस्त माइनस 17 जुलाई, बिकॉज आज मैं इसका गुड्स रिसीव कर रहा हूँ, तो आज से कितना दिन इसका लाइफ बाकी है? इस महीने के 14 दिन और इस महीने के 31 दिन, 45 डेज टोटल रिमेनिंग शेल्फ लाइफ। इसका लाइफ अभी 45 डेज बाकी है। मुझे कितना चाहिए? मुझे मिनिमम 30 दिन चाहिए। तो 30 दिन से ज्यादा है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, 30 दिन से अगर कम होगा तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। So this is how you can activate shelf life expiration date check, and you can check the shelf life at the time of goods receipt or at the time of goods issues. तो कॉन्फ़िग में प्लांट लेवल पे, मूवमेंट टाइप लेवल पे उसको एक्टिवेट करना है, मटेरियल मास्टर में उसका मास्टर डेटा मेंटेन करना है, एंड गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे हमको SLED का डेटा यहाँ पे एंटर करना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। So based on the posting date and these details, system will check how much is the remaining shelf life for that material, and system will give a error message, or it will allow to post the goods receipt based on the result of the check. Now you can save it and the goods receipt will be posted. So this is how you use the shelf life expiration date check. Now there are two more points. Early delivery and late delivery. Delivery too early or too late delivery. फॉर एग्जाम्पल, हमने आज पीओ निकाला और पीओ का डिलीवरी डेट है सपोज आज 17th है, पीओ का डिलीवरी डेट है सपोज 25 जुलाई 2023, डिलीवरी डेट ऑफ द परचेस ऑर्डर। 25 जुलाई को पीओ का डिलीवरी होना चाहिए, ठीक है? दिस इज एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट फ्रॉम द वेंडर। तो हमने वेंडर को अगर आज पीओ दिया तो 25 तारीख को मुझे मटेरियल डिलीवर होना चाहिए, बट वेंडर ने सपोज मुझे 19 जुलाई को मटेरियल डिलीवर किया। 25 मेरा एक्सपेक्टेड डेट है, वेंडर ने मुझे 19 को ही दे दिया, 6 दिन पहले दे दिया। सो दिस इज अर्ली डिलीवरी। एंड सेकेंड केस इज 25 जुलाई को मुझे मटेरियल चाहिए था,
और वेंडर ने मुझे मटेरियल दे दिया सपोज 1 August 2020. सो दिस इज लेट डिलीवरी. ठीक है. सो अर्ली डिलीवरी एंड लेट डिलीवरी. तो अगर मेरे डिलीवरी डेट के बहुत पहले मटेरियल आता है या डिलीवरी डेट के बहुत बाद मटेरियल आता है, तो आई कैन सेट अप messages in system to warn me or to give me a error message based on the delivery date. तो इस केस में अगर मैसेज अर्ली है तो मुझे उसको रिसीव मतलब गुड्स रिसिप्ट अर्ली या लेट है तो उसको रिसीव करना है या नहीं करना है, उस हिसाब से मैं सिस्टम में वार्निंग मैसेज या एरर मैसेज को सेट कर सकता हूँ. बेस्ड ऑन दैट सिस्टम कैन warn us or restrict us from doing the goods receipt. तो इसको ये मैसेजेस कैसे सेट किया जाता है that we will see now. Now this goods receipt and I'll show you. Now let us do the goods receipt again for the PO. सेम PO के अगेंस्ट में मैं goods receipt कर रहा हूँ. कहाँ पे लेना है? Check it. And you see, earliest possible delivery date is 25th of July 2023. Earliest possible delivery date is 25th of July 2023. So if you display the purchase order, PO का जो डिलीवरी डेट है दैट इज 25th of July. 25 जुलाई इसका डिलीवरी डेट है एंड मैं कब रिसीव कर रहा हूँ इसको? आज के दिन में 17th of July. मीन्स आई एम रिसीविंग इट अर्ली एंड सिस्टम इज वार्निंग मी दैट द अर्लीस्ट पॉसिबल डिलीवरी डेट इज 25th of July. इसका डिलीवरी डेट 25 जुलाई होना चाहिए था, but you are receiving it on 17th of July. So this message is set as a warning message. ठीक है. तो सिस्टम आपको वार्न कर रहा है कि ये अर्ली डिलीवरी है. व्हाट इज द मैसेज नंबर? M7254. M7254. So whenever there is a warning message or error message, if you click on this question mark, it will open a pop-up and where you can see the message number for this message. So in message number you can see 5 characters here. So first two characters, that is M7, belongs to application area and the last 3 characters are for the message number. So message number is 254 and these 2 characters M7 belongs to application area. Now in configuration we can see where this is configured. Let me close this, open a new session, go to SPRO, IMG. We are in inventory management, so we need to go to materials management, inventory management, and here you can see define attributes of system messages. Execute it. Go to settings for system messages, and here you can see version 00, application area and message number. So version 00 is used for all the standard SAP messages. SAP ने जो messages खुद से set किए हुए उनका वर्जन 00 होता है. So you can go to position, version will be 00. Application area हमारे मैसेज में क्या था? M7 था. M7 is the application area and 254 is the message number. So you can search here M7 application area and message number is 254. And you can see the message text is earliest possible delivery date is, and the message category is a warning message.
That is why this message is displayed as a warning message. अगर मैं इस मैसेज को एरर में कन्वर्ट करता हूं, तो अगर बिजनेस ने आपको बोला अर्ली डिलीवरी नहीं होना चाहिए, लेट डिलीवरी नहीं होना चाहिए, दोनों में एरर होना चाहिए, तो फॉर अर्ली डिलीवरी यू कैन सेट हियर एरर मैसेज एंड सेव इट. Once you save it, come here and check. The message is converted into error message. Earliest possible delivery date is 25th of July 2023, and this is now a error message. So this is how you can decide whether it needs to be a warning message or error message in case of early delivery. Now in case of late delivery, it is the message number for late delivery. Okay. Now for late delivery, how which message we can set? We forgot the message number, we can check it here. Now for late delivery, what we need to do is we need to go to the purchase order. Let me display the PO, change the PO. Now in purchase order, in delivery tab, you can see this latest goods receipt date. Latest goods receipt date. In this field, if you enter a date, so I need to select here 16th of July. Okay, why I will tell you. And the delivery date is suppose 15th of July. तो इसको टेस्ट करना है तो हमको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. सपोज इसका डिलीवरी डेट था 15th of July, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाला हुआ है लेटेस्ट GR डेट 16th of July. इसका मतलब मैक्सिमम 16th of July तक इसका गुड्स रिसिप्ट होना चाहिए. इसके बाद अगर गुड्स रिसिप्ट होता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ लेट goods receipt, late delivery. I'll save the purchase order, save it. So we are telling system कि 16th of July के बाद इस PO का गुड्स रिसिप्ट किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए. लेटेस्ट गुड्स रिसिप्ट डेट 16th of July के पहले होता है तो ठीक है, 16th of July के बाद में अगर होता है तो इट्स अ लेट डिलीवरी. एंड बेस्ड ऑन दिस देन वी कैन populate a error message or a warning message at the time of goods receipt. जनरली इसको एरर मैसेज रखा जाता है. So if I do the goods receipt now, PO number, check, and you can see latest possible delivery date was 16th of July and the message number is M7163. So if you see here, materials management, M7163, and the message is configured as error message.
So based on this configuration, system gives you latest possible delivery date was 16th of July. So this way you can control early deliveries and late deliveries. Clear? Yes, sir. ठीक है. Now let me enter here 16th of July and check it, and I can post it. Now try to cancel this and check it. Now here you can see a message. A reason has to be record entered for movement type 102. Reason or reasons. So why you need to enter a reason while doing 102? गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे हमने रीजन नहीं डाला था. कैंसिल करते समय ये हमको रीजन क्यों पूछ रहा है? बिकॉज you want to analyze in case of reversals, in case of cancellations, or in case of return deliveries, you want to understand what are the reasons due to which we are doing cancellations, returns or return deliveries. तो कोई यूजर है वो गुड्स रिसिप्ट करते समय बार बार एरर कर रहा है, वापस उसको कैंसिल कर रहा है, वापस उसका गुड्स रिसिप्ट कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर वेंडर है जिसका मटेरियल बार बार रिजेक्ट हो रहा है और वो हम उसमें 122 मूवमेंट से उसको रिटर्न डिलीवरी भेज रहे हैं. सो वी कैन कैप्चर द रीजंस कि क्यों हो रहा है, एंड वी कैन टेक प्रोएक्टिव actions on those reasons. For that, you can create reasons and you can ask user to enter those reasons at the time of cancellation or return deliveries. तो ये जो reasons यहाँ पे enter करना है, ये reasons configuration में हम create करते हैं. We can define these reasons in configuration. We can activate the reasons for movement type, and then we need to enter it in application while doing the cancellation or while doing the return deliveries. So where these reasons can be created. So if you go to under same path, IMG, materials management, inventory management and physical inventory, go to movement types, and here you can see record reason for goods movements. Reason for goods movement, and here you can see the reason. क्या क्या रीजन है ये? 0011, 0012, 0015, 0016, 21, 22 and 27. These reasons are for movement type 102. So if you see here, select movement type 102 and 11, 12, 15, 16, 21, 22 and 27. 11, 12, 15, 16, 21, 22 and 27. So these reasons are defined in configuration. तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन में रीजन को डिफाइन करते हो एंड यू एक्टिवेट दैट रीजन फॉर दिस मूवमेंट टाइप 102. तो ये रीजंस यहाँ पे डिफाइंड है किसके लिए? मूवमेंट टाइप 102 के लिए. सो इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू रीजन यू कैन मेंटेन हियर, गिव द रीजन नेम फॉर एग्जांपल 0023 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, रीजन नंबर 0023 और इसका डिस्क्रिप्शन. क्या डिस्क्रिप्शन डाला मैंने इसमें? Wrong storage location, quantity received incorrect, wrong quantity, wrong storage limit, wrong quantity. ठीक है, मैंने इसमें कुछ तो डाला, फॉर एग्जांपल रॉन्ग डिलीवरी नोट इंटेक्ट, मतलब मैंने इनवॉइस नंबर गलत डाला उस. ठीक है, और मैंने इसको सेव किया. तो ये रीजन मैंने मूवमेंट टाइप 102 के लिए ऐड किया. नाउ यू कम हियर, क्लोज दिस, एंड यू कैन सी
The reason is available here 0023 wrong delivery note. So you can create reasons in configuration and those can be available at the application. Now if you go back, ये field mandatory है. You will not be able to post this goods cancellation unless you enter a value in the reason. This field is mandatory. ये कैसे mandatory किया हुआ है? तो इस मूवमेंट टाइप पे लेवल पे कंट्रोल रीजन, आपने रीजन को मेंटेन तो किया मूवमेंट टाइप के लिए, बट आप उसको कंट्रोल भी कर रहे हो. कैसे कंट्रोल कर रहे हो? यहाँ पे देखो 102 एंट्री इन दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड. तो बाय सेलेक्टिंग दिस वैल्यू प्लस हियर यू हैव मेड दिस फील्ड एज रिक्वायर्ड एंट्री. अगर मैं यहाँ पे ऑप्शनल करके इसको सेव कर देता हूँ, नाउ एंट्री इन दिस फील्ड इज ऑप्शनल. नाउ इफ यू गो बैक एंड चेक इट, सिस्टम विल अलाउ यू. भले ही आपने रीजंस वहां पे मेंटेन किए हुए हैं, बट यू आर नॉट asking user mandatory to fill this value. So one thing is you maintain the reasons for movement type, the other thing is you control those reasons. So जिस जिस movement type पे हमको reasons record करने हैं वहां पे हमको mandatory उसको करना है and save it. Now you can see the field is a required entry. So यहाँ पे यूजर जब तक रीजन नहीं डालेगा तब तक वो आगे नहीं जा सकता है. So this is how you configure the reasons in the configuration and you control the reasons to record the reasons at the time of goods movement. तो आप देख सकते हो 124 is a return delivery, 122 is also a return delivery, so you can make it as. तो जिस भी मूवमेंट टाइप पे आपको रीजन रिकॉर्ड करना है उस पे आपको इसको एक्टिवेट करना चाहिए. सो विद दिस द चैप्टर गुड्स रिसिप्ट इज कंप्लीटेड. कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कल पूछ लेना. ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर गुड्स इश्यूज. ओके, Okay, sir. चलो, बाय बाय, टेक केयर.